Hello students, today I will explain the classification of elements. First of all, the term classification. What is the need of classification for anything? किसी भी चीज़ के लिए classification का meaning क्या होता है and what is the need for classification? So, to categorize the same thing in the same group means suppose there are three bowls here, this and this one. There are the three objects and I have put like this in zigzag form. I have taken without sequence. So it is very typical. Three type elements or three type particles are present on the screen, and this is very complicated to identify the properties of each other. Now if I will categorize it like जो स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिया है, स्क्वायर फॉर्म को मैं एक साथ पुट कर रही हूँ लाइक दिस मीन्स यहाँ पर जो 5 एलिमेंट्स या 5 पार्टिकल्स को मैंने शो किया है वो अकॉर्डिंग टू देयर शेप दे विल रिजेंबल मीन्स टू easy and convenient study of any object, there is a categorization of particles of object is known as classification. For the elements, this classification is done on the basis of group and period, means all the same properties elements are lying in the same group. Clear? Means now the evolution of modern periodic table जो group और period जो अलाइन हुए हैं वो हम किस बिहाव पर करते हैं. There are some rule here. First rule is Drawbacks Triad rule. The first topic is I have used a term triad. See, the three things with together is known as triad. तीन चीज़ों को हम एक साथ means for elements, if I am saying about element, the three element combination is known as triad, while two elements combination is known as pair. This is pair and this one is 1 2 3, this one is triad. Clear? Now the Drawbacks triad rule, according to this rule, see on the screen there are some element here, lithium, sodium and potassium. Lithium, sodium, potassium. If we arrange these elements like this, lithium, aluminium, lithium, sodium and potassium. Lithium has the atomic mass 7. Sodium, we don't know about the sodium and it has the atomic mass 13. So there is a rule that the average atomic mass of first and third will give the answer of middle. Means 7 plus 39 divided by 2, it will be 46 divided by 2 means 23, and 23 is the mass of sodium. It is clear? This is the triad rule of Drawbacks. It is the scientist name. Next is, our next rule is Octave Rule. Means according to this rule, in like in rhyme scheme में आप पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी and again we will study सा. Means अगर हम सेम ग्रुप में जाएं तो हमें सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिलता है. जैसे हम राइम स्कीम में पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा. मीन्स जब हम एट्थ हम राइम लगाएंगे तो इट विल बी सेम. हम सा से स्टार्ट कर रहे हैं तो सा विल गेट, रा से स्टार्ट कर रहे हैं रा विल गेट. ठीक है, इट विल गेट अगेन. दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज periodicity. I am giving the example here. Suppose I am taking lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. और फ्लोरीन के बाद में अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आता है सोडियम. मीन्स लिथियम एंड सोडियम हैज़ द सेम प्रॉपर्टी. If we start from anywhere in the periodic table,
the first element and eighth element have the same property like in rhyme scheme. आप वहाँ सा से स्टार्ट कर रहे थे, पूरा rhyme scheme करने के बाद आपने दोबारा देखा सा, ठीक है, तो इसको म्यूजिकल राइम रूल भी बोलते हैं. इट इज क्लियर. नाउ we will study about the Mendeleev periodic table and Mendeleev periodic law. According to Mendeleev periodic law, all the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic masses. Okay, atomic masses के ऊपर डिपेंड करता है एलिमेंट का कैटेगराइजेशन, एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़. इट वाज वेरी रॉन्ग, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया है, it may be also called the modified Mendeleev periodic law. According to modern periodic law, all the physical and chemical properties are not the prior function of their atomic masses. It depend on the atomic number. Clear? Now, in this series, we will study the next topic, characteristic of group and period in the periodic table. There is a long form periodic table which is given in the picture. In long form periodic table, there are 18 groups which are lying in vertical form and 7 period which are lying in horizontal form. Right? Now, we will study one by one. Firstly, we will study according to the period classification of element. First of all, we came to know about the number of element. There is a place of 118 element in the periodic table, but according to your NCERT syllabus, only 114 elements are discovered at now. 4 elements are under discovery, but in 2016 all the elements has been discovered. Okay, but according to NCERT, we will study about the 114 element, and the place in periodic table is mentioned for the 118 element. Okay, next is we will study the classification on the basis of 7th period. As you may see, in first period there are 2 elements only, hydrogen. First period, these are the period first, and number of elements I am giving here, only 2 elements, atomic number 1 to 2 फर्स्ट पीरियड के लिए. पीरियड सेकंड में atomic number 3 to 10. There are 8 elements. In third period 11 to 18, 8 elements are present. In next fourth period 19 to 36, 18 elements are present. In next 37 to 54, 18 elements are further present, and 55 to 86, there are 32 elements, and next is 87 to 118, but 4 elements places are vacant, so that's why it is known as incomplete period. Okay, this is the total data of elements according to the period. According to the period, first period contain only 2 elements, that's why it is known as shortest period. Second and third having 8 elements in each, that's why it is known as short period. In fourth and fifth, 18 elements are containing by each, these are known as long period. Period 6 is known as longest period because it contains 32 elements. Okay, and in 7th period it is known as incomplete period. After the completion it will be the long period, longest period में count होगा ये. Next we will study about the group. According to the group, elements are classified as S block elements, P block elements, D block elements, and F block elements. See, the block of elements are given to the name according to the entrance of last electron into the orbital. Means the elements whose last electron enter in S orbital are known as S block elements, like sodium,
1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Last electron is present in s orbital, that's why it is known as s block element. Okay, and suppose I am giving here boron. Boron has the 5 atomic number 1s2, 2s2 and 2p1. The element whose last electron enter in the p orbital are known as p block elements. Next, suppose I am giving the example of scandium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. It is the electronic configuration of scandium, and in scandium the last electron goes into d orbital, that's why it is known as d block element. I am giving the next example. It is the cerium, atomic number 58. It contains 1s2, 2s2, 2p6 and last electronic configuration is 6s2, 4f2, 5d0. Last electron enter in the f orbital, that is the reason it is known as f block element. It is the first member of lanthanoids. लैंथेनियम सीरीज का ये फर्स्ट मेंबर होता है सीरियम. इट इज क्लियर. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द 18 ग्रुप. 18 ग्रुप शो लाइक दिस. s orbital contain only 2 electron, either it may contain ns1 or ns2. that is the reason कि इसको हमने दो ग्रुप में शो किया गया है. p ब्लॉक के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स np1 से लेकर 6 तक होते हैं. दैट्स वाई इट कंटेन 6 ग्रुप. क्लियर. फॉर d ऑर्बिटल it will be 1 to 10. that is the reason it contain 10 group. okay, means s, d and p, it is the systematic way of periodic table. s के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, that's why it contain 2 group. d के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, it contain 10 group. इसमें होते हैं p में 6, it contain this, means the sum of these will be 18. now this is the drawback also कि f ब्लॉक को कोई भी ग्रुप अलॉट नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. इट इज क्लियर. now next topic is how will we find the position of element in the periodic table. there is a rule NLX where n show period, L will show block, while X show the group of the element. right. suppose I am giving here 3s1, means period third, s block element and group will be first. okay, means suppose I am saying 3s2, 3p3. now we will find 3 third period and group will be find on the basis of addition of 2 and 3. means जितने भी ग्रुप में, जितने भी आउटर सेल में, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका टोटल जाता है. अब देखिए ये भी थर्ड सेल में, ये भी थर्ड सेल में, इट मीन्स इन दोनों का जाएगा टोटल और ये होगा 5th ग्रुप एलिमेंट. क्लियर. अब यहाँ पर 5th ग्रुप हमने बोल दिया है और यहाँ सेम सेल अगर जा रही है, मीन्स इफ ns2np1, मतलब पीरियड हो गया है 1, पीरियड हो गया है n जो आगे लिखा है, p ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द p ऑर्बिटल, एंड 2 and 1 ग्रुप विल बी थर्ड. ओके, और थर्ड में भी जब सेम वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेल की,
तो इट विल बी थर्ड ए. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज इफ आई एम सेइंग फॉरेस्ट 2 3D2, फॉरेस्ट 2 3D2, इस कंडीशन में आउटर सेल कौन सी है? आउटर सेल है बेटे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पर पीरियड जाएगा आपका 4 और ग्रुप आपका जाएगा, एडिशन होके जाएगा 2 और 2 4. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि वहाँ पर भी 4 है. अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख रही हूँ फॉरेस्ट 2 फॉर P2, इन दिस कंडीशन ग्रुप विल ऑल्सो बी 4. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट? अगर अंदर की सेल खाली होती है तो ये बी में काउंट होगा. इट इज़ क्लियर. और बाहर की सेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सीक्वेंस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी ए. ये फोर्थ ए है और ये वाला फोर्थ बी है. इट इज़ क्लियर. नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ मंडली पीरियोडिक टेबल यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू सेट इन योर माइंड जो जो आपको वहाँ पर लगा है पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हुए. पीरियोडिक टेबल में देखिए आप हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिला. इट के अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट शो 1s1. दैट्स वाई इट शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू NS1. और NS1 होती है, सपोज आप लिथियम का निकाल रहे हैं, लिथियम के केस में इट विल बी 1s2 2s1. इट्स सिमिलर टू द लिथियम एंड सोडियम ऑल्सो. दैट मीन्स इट इज़ कैप्ट इन फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड कंडीशन देखिए, हाइड्रोजन शो 1 वैलेंसी. दैट मीन्स के सेल के अंदर, फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इन केस ऑफ हीलियम 2 मीन्स इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबिलिटी. मीन्स इफ आई एम सेइंग अबाउट द फ्लोरीन इट हैज़ द 2 7, मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए. लाइक फ्लोरीन फ्लोराइड जैसे वो फॉर्म करता है ऐसे ही हाइड्राइड फॉर्म करता है. मीन्स देयर इज़ नो फिक्स position of hydrogen in the periodic table. Next, there is no fixed position of isotopes. Isotopes means ऐसे एलिमेंट जिनका अटोमिक नंबर सेम होता है, अटोमिक मास डिफरेंट होता है. लाइक दिस, these are the isotope of each other and this is the main thing कि आइसोटॉप हमेशा सेम एलिमेंट का होता है. इट इज़ क्लियर. यूजेस क्या है, सक्सेस क्या रहे इसके? इससे हम अटोमिक वेट फाइंड कर सकते हैं. न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी में इसने हेल्प किया है. ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स and trends. What are the variations in group and period according to the phenomenon. Okay student, have a nice day.